आजकल ये नोशन हो गया है दैट फीमेल्स आर यूजिंग फ्यू सेक्शंस। तो वाइफ है उसने अपने स्पेसिफिकली अपने ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ पे एलिगेशंस लगाए थे। On behalf of Pathshala family, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all to our lecture 15 of our online CLAT marathon series for the upcoming CLAT UG 2024. So, the topic which we would be dealing today is also very leading in a very recent judgment given by the Supreme Court, and it basically highlighted that women in a marriage situation cannot always exploit man or his parents or his relatives, because आजकल ये नोशन हो गया है that females are using few sections of our Indian Penal Code, like they are misusing it basically. For example, they are putting wrong allegations just to find out their way out from a relationship or a situationship. But जनरली पहले यही बिलीव करते थे कि फीमेल्स आर राइट, वुमेन इज ऑलवेज राइट, बट इट्स नॉट द केस इन द लीगल फ्रेटर्निटी, बिकॉज वी नीड फैक्ट्स, वी नीड एविडेंस। अगर किसी ने बोल दिया ओ ए रेड मी, इट इज नॉट बिलीवेबल until unless the other person, the person putting up the allegations, tells or gives evidence, proper evidence that A has raped me. Okay, so let's start. So today's topic is Supreme Court squashes Section 498A IPC case against in-laws. तो अब पहले स्टार्ट करने से पहले let's start with the basic thing which is in the heading of our topic, which is Section 498A of IPC, that is 498A of Indian Penal Code. 498A of Indian Penal Code basically tells us about the cruelty by husband or relative of husband to the married woman in the particular marriage period. So उसके क्या होता है and क्या punishments है. So 498A इसकी बात करता है. So let's give it a read. Husband or relative of a husband, it's मतलब इसमें दोनों चीज़ें, husband या फिर relative of a husband, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आ गई आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और एनी XYZ पर्सन रिलेटेड टू द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। अब यहाँ क्रुएलिटी से क्या मतलब है? तो बेसिक IPC में कहीं भी हमें याद रखना है क्रुएलिटी वर्ड नहीं नरेट किया गया, उसका डेफिनेट मीनिंग नहीं किया है, बट इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड through the period of time, and cruelty is basically mental or physical abuse to a female. Okay, so let's give it a read for the section 498A. Whoever being the husband or the relative of the husband, भी मैंने आपको बताया relative of the husband के examples, of a woman subjects such woman to cruelty. Cruelty आप देख लेते हैं. Cruelty can be defined as any act that causes physical, mental or emotional harm or harassment. It includes both physical violence and mental torture, such as constant harassment, verbal abuse, threats or humiliation. Okay, तो यहाँ पे पाते हैं subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. और जो फाइन होता है, अगर यहाँ पे डेफिनेट फाइन का नहीं दिया गया है तो द फाइन वुड बी रीजनेबल एज पर द सिचुएशन ऑफ द केस गोइंग ऑन. ओके, अब जो ये केस है हम इसका जान लेते हैं. तो दिस केस इज लाइक इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई हैं इस पे. तो हम एक बार बैकग्राउंड जानते हैं केस का. तो बेसिकली देयर वर हस्बैंड एंड वाइफ जो 2007 में, आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे. दे गॉट मैरिड इन द ईयर 2007, बट एंड जो वाइफ है उसने अपने
स्पेसिफिकली अपने ब्रदर इन लॉ और मदर इन लॉ पे एलिगेशंस लगाए थे मेंटल क्रुएलिटी हरासमेंट के, लाइक एज पर सेक्शन 498A ऑफ IPC एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी एंड सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट डिमांडिंग ऑफ डाउरी। तो ये सेक्शन इनकी एप्लीकेशन भी बताते हैं, इनके पनिशमेंट्स भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इन इंडिया गिविंग, ईदर द पर्सन हु गिव्स और द पर्सन हु टेक्स, दे बोथ आर लायबल फॉर द crime offense of dowry, and even if any person demands the dowry either directly or indirectly, they can also be punished under this act. Okay, तो हुआ क्या था that they got married in 2007 and जो फीमेल थी उसने स्पेशली अपनी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को टारगेट किया। उसने अपने ब्रदर इन लॉ पे सेक्शुअल हरासमेंट और मेंटल टॉर्चर के भी केसेस डाले, एंड इवन उसने अपने ब्रदर इन लॉ पे ये भी बोला दैट ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ द मैरिज उसने उसके पेरेंट्स से कार और डाउरी की भी डिमांड करी। अब इसमें कुछ सिचुएशंस, अगर इफ a layman would have told these things, then definitely we would have believed her. But कोर्ट ने circumstances देखे तो उन्होंने realize किया that जो ये फीमेल थी, when she got married, after some time she moved to Mumbai with her husband, because उसका husband का जॉब मुंबई में था, and she settled there. उसका in-laws से जो interaction होता था वो सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम होता था मेजरली, या और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हॉलीडेज होता था। ठीक है, ओके, सो हम एक बार इसका क्विक रीडिंग देते हैं पहले जितना हमने किया है। आफ्टर द मैरिज द वाइफ पार्टेड वेज एंड स्टार्टेड रिजाइडिंग विद हर पेरेंट्स। ठीक है, उस जो पीरियड हुआ इसने 2009 में शी मूव टू हर पेरेंटल होम जब हस्बैंड से लड़ाई करने के बाद, एंड एट दैट टाइम द मदर इन लॉ हैड सबमिटेड। अब मदर इन लॉ को डाउट हो गया था कि डेफिनेटली शी वुड फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट हर लाइक दिस। तो मदर इन लॉ पहले ही जाके पुलिस ऑफिसर को बोली दैट देयर माइट बी अ केस दैट शी माइट पुट एलिगेशंस ऑफ मेंटल क्रुएल्टी और डाउरी ऑन देम। ओके, रिप्रेजेंटेशन टू पुलिस स्टेशन एप्रीहेंडिंग दैट वाइफ may make allegations against them about harassing her for dowry. Prior to the filing of the divorce petition by the husband on 8th May 2013, the wife made a written complaint on 5th February 2013 in police station, leveling several allegations against her husband and her in-laws. ठीक है, an FIR was registered against the 4 of them under section 498A, section 3 and section 4 of Dowry Prohibition Act. Okay. Now कोर्ट ने क्या एनालाइज किया? तो कोर्ट ने by looking at the facts of the cases and going through each and every aspect of the ongoing trial, the court said first of all बहुत सारी discrepancies हैं इस केस में कि उसने बोला कि मदर इन लॉ मेरे को टॉर्चर करती थी, पर वो मदर इन लॉ के साथ रहती ही नहीं थी। देन उसने ब्रदर इन लॉ को किया, तो ब्रदर इन लॉ he also didn't used to live with her. So let's see कि कोर्ट का एनालिसिस क्या था। After referring to various precedents, the court took note of certain glaring inconsistencies. Though the wife had earlier alleged that her mother-in-law and her brother-in-law had taken away all her jewelry. उसने बोला कि उन्होंने मेरी सारी jewelry ले ली है, but later on in front of the family court उसने बोला no, my husband had the jewelry. तो यहाँ पे उसको लगा कि इसने तो पहले अपने in-laws का नाम लिया था, फिर इसने अपने husband का नाम ले लिया, तो what is going on? After her marriage, on the pretext of safekeeping, specifically stated in her deposition before the family court, and that her entire Sridhar jewelry was with her husband, and despite of repeated demands, he was not returning her. Further, during her cross-examination, the court ने analyze किया that she admitted that she had made a complaint to the High Court against her brother-in-law. The complaint was styled, उसने अपने brother-in-law के कंप्लेंट की थी एनोनिमस बन के, ये उसने बाद में एक्सेप्ट किया, बट द वाइफ वॉलंटरीली ओन्ड अप टू बीइंग विद
author. This aspect bears out her animosity against her in-laws and more particularly her brother-in-law. It shows that she had some particular grudge against her brother-in-law. Okay. Then what happened? The court noted that wife parted ways with the matrimonial home and her in-laws in 2009, but उसने 2013 तक कोई complaint नहीं करी थी. But she did not choose to make a complaint against them in relation to dowry harassment till the year 2013. Surprisingly, FIR dated 9 February 2013 records that the occurrence of the offence was from 2nd July 2007 to 5th February 2013, but no allegations were made by the wife against the in-laws after she left her matrimonial home. जब वो 2009 में ऑलरेडी अपने मैट्रिमोनियल होम चली गई, ना उसने 2013 तक कंप्लेंट की, तो obviously this was the major inconsistency that even she is not living with them and she is telling that they're harassing her. The court opined that wife's allegations against the parents are wholly insufficient, court ने बोला, and prima facie do not make out a case against them. Further, they are so far-fetched and improbable that no prudent person can conclude that there are sufficient grounds to proceed against them. Okay. Now, the Supreme Court finally said that while quashing, उसने Supreme Court ने quash कर दी इनकी FIR and criminal proceedings against the appellants, that is in-laws. Okay, they were proved innocent. Opined that wife's allegations against the appellants are wholly insufficient and prima facie they do not make out a case against them. Further, they are so far-fetched and improbable that no prudent person can conclude that there are sufficient grounds to proceed against them. Because if you, after studying the facts and analyzing all the situations, there was a huge gap between the time period as well as the statements which she has quoted. Plus, उसके statements contradictory निकल रहे थे cross-examination में. Thus, it held that this was a fit case for the High Court to exercise its inherent power under Section 482 CRPC and to quash the FIR and the consequential proceedings. So the Supreme Court finally told me, okay, the in-laws are innocent because there are so many inconsistencies in the case, in the background of the case, and they cannot be convicted for something which they have not done. I'm not saying that they ठीक है थोड़ी बहुत जो भी होगा, but there is not a major issue that they should be convicted under Section 498A and the Dowry Prohibition Act. So इससे we conclude that while going through everything in a particular person, a layman should not believe always the one side of the story. दोनों sides को आपको judge करना है, you have to hear them and then you have to step by step compare everything, that the situation which is going on, so who is right and who is wrong. Okay, and the females are not always right. ठीक है, हमें एक बार लगता है कि oh she is going through domestic violence, but अगर आप आज की एज में देखेंगे, there are so many cases where husbands are being, the domestic violence are being held against the husbands and their families are getting harassed. So I think this Section 498A, according to my opinion, it should become gender neutral now, because of हमारी society, we have entered into 21st century. Our society is progressing. तो this ground कि सिर्फ females ही टारगेट हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस का या हरासमेंट का, दिस शुड बी रिमूव्ड. यस वो होती हैं, but even males are getting, there's so many cases but they go unreported, nobody believes them. So I think we should all keep up an open mind and look for the truth rather than believing blindly on something. I hope you liked today's video, and if you like us, do subscribe to us so that you can get update about the next video. Thank you.